अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इट्स एंड इट्स, विद apostrophe एंड विदाउट apostrophe। ITS इट्स, जो इट्स विदाउट apostrophe है, it is an adjective, a possessive adjective, like the cat sat on its tail. Its is defining tail, so its is a possessive adjective. Consume the milk before its expiration date. Its here is again acting as an adjective because we are talking about the milk, uski expiration date. IT apostrophe S, it is the contraction or the short form of it is or it has. Apostrophe वाला जो it's है वो it is की short form भी हो सकती है और it has की short form भी हो सकती है. Like it's been raining since yesterday. यहाँ पे जो it's है it is the short form of it has. It could be it has been raining since yesterday. I don't know if it's right or not. यहाँ पे जो it's है, it is the short form of it is. I don't know if it is right or not. Now the question is how to choose whether you have to use ITS it's or IT apostrophe S it's. को दोनों में से कौन सा वाला it's use करना है? जब भी ये वाला वर्ड आप कहीं यूज करें इट्स वाला वर्ड, तो उस वर्ड को इट इज से या इट हैज से रिप्लेस करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इट हैज और इट इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट, तो यू कैन गो विद दैट, अदरवाइज इट मींस ITS वाला इट्स लगेगा, दैट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ इट्स मोटर स्टार्ट्स वर्किंग अगेन वी विल नीड द डो। अब यहाँ पे कौन सा इट्स आएगा? इसको इट इज से रिप्लेस करके देखते हैं, क्या ये ऐसे हो सकता है? इफ इट इज मोटर, if it has motor start working again we'll need the do. No, it is not possible. It means यहाँ पे it's जो आएगा that is without apostrophe, और अगर आप देखें तो it will be if its motor start working again we will need the do, and it's here is referring to the motor. Next sentence, the car turned to its left. Now again इस यहाँ पे it's को हम it is या it has से replace करते हैं. The car turned to it is left or the car turned to it has left. Does it make any sense? No. So it will be the car turned to its left. यहाँ पे it's जो है ये without apostrophe होगा, it is an adjective it's. Next sentence, it's been decided that I'll meet her. यहाँ पे भी अब हम इट्स को इट इज या इट हैज से रिप्लेस करके देखते हैं। इट इज बीन डिसाइडेड दैट आई विल मीट हर। नो, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट आई विल मीट हर। यस, सो इट मींस यहाँ पे जो इट्स है इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट हैज, सो इट्स बीन डिसाइडेड दैट आई विल मीट हर, यहाँ पे apostrophe वाला आएगा। नेक्स्ट, इट्स नॉट कन्वीनियंट। अब यहाँ पे भी इसको इट इज इट हैज दोनों से करके देखते हैं। इट हैज नॉट कन्वीनियंट, डज इट मेक सेंस? नो। It is not convenient. It makes sense. Yes. So यहाँ पे जो it's आएगा again it will be with an apostrophe and it is it's not convenient.